हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन? गुड. Okay, 12.7, question number 7, right? Look there, the Heron formula, all the concept based on that particular numericals. Okay, that particular numericals we must have to read very very carefully, and we must understand the meaning of each and every line. If it is the first phase and very important phase, after it easily you can solve. And suppose it is very difficult also, then also in exam 50 to 60% mark easily you can gain. Right? So next 7 question, first I will read very carefully and then we will start. What is given in question number 7? See here, in question number 7 it is given one kite is there and it is in the shape of square. One kite, it is in the shape of square. It is given in questions. Okay, one kite is there, it is in the shape of square. After it given, it's with diagonals 32 centimeter. Diagonals. Okay, it means both the diagonals. Its length is 32 centimeter. Okay, as well as one more part of this particular kite, it's a tail. Its tail. It is isosceles triangles with sides 6 centimeter and base 8 centimeter. So we have to find out paper used for this particular kite. And one more condition is given already in the question. What is given? It is made of 3 different shades. It is made of 3 different shades. So one thing is clear ki kite is there, 3 colors of paper used here. Okay, in this 3 colors papers, this kite shape, this particular shape is square. Its diagonals given already. Its tail, its tails in the shape of isosceles triangle. Isosceles means 2 sides are equal, both the sides are given, as well as base given. So something is clear. With the help of this, now first we have to draw a rough diagram. Rough diagram, you can see this is a square shape kite. Okay, now we are going to see here, it's 2 parts, means diagonals. First of all, A to D and B to C. I have given AB, ABCD or PQRS, yeah, ABCD, whatever be, no issue. This particular name depend as per your choice. Now look here, its area, one is this, right, and second one is this. We are getting this area. What is given there? Given the diagonals 32 centimeter. So this diagonal B to C 32 centimeter and A to D, this is also 32 centimeter. Okay, the diagonal is given 32 centimeter, right? After it, the another part, it is third part of this particular kite. Okay, and here it is in the shape of isosceles triangle with base 8 and sides 6 centimeter. It is base 8 and side 6 centimeter. Okay, clear? And now 3 colors used here. First part one color, second part another color, थर्ड पार्ट अनदर कलर. और हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको क्या निकालना है कि कौन से कलर का कितना पेपर इसमें यूज हुआ है पूरे काइट को बनाने के लिए. ओके, अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 3 एरियाज तो हमको दिए, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 एंड एरिया नंबर 3. ये 3 ही एरियाज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. जैसे हम 3 एरिया निकालेंगे, अवर न्यूमेरिकल सॉल्व, राइट? ओके, तो देखिए यहाँ पर, suppose this particular kite is made up of with square A B D C. मैंने इसको D नाम दिया है. Okay, A B D and C. Suppose the kite is made with the square A B D C and isosceles triangle D E F. ये काइट है 2 चीजों से बना है. कौन सी 2 चीजों से बना है? एक तो इसमें स्क्वायर यूज हुआ है, that is ABDC, as well as one isosceles triangle here, it is DEF. ओके, ये हमने लिख दिया. अब ये लिखने के बाद हमको क्या दे रखा है? नेक्स्ट थिंग, sides of this particular squares already given. What is given? Its isosceles side 6 and 8. One thing is clear. And after it, what is given for this particular square? Diagonals given. So B to C 32 as well as A to D 32. Okay.
means we can say the diagonals of square ABDC is 32 centimeter. We know that diagonals of a square bisect each other at right angle. You know this thing? Yes, it is common thing. 6th standard also we read. क्या पढ़ा था हमने 6th standard के अंदर कि diagonals of square bisect each other. Diagonals of a square, square के diagonals एक दूसरे को कहां पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पोजीशन के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो यहां पर जहां पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सपोज दैट पॉइंट इज O, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज O. ओके, आप इन्होंने क्या करा? बाइसेक्ट करना है, मींस वी आर गोइंग टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स. अंडरस्टूड? तो ये जो हमारा था 32, ये टू इक्वल पार्ट्स यहां O पे डिवाइड हो गया, एज वेल एज BC दिस आल्सो इक्वल. मींस अब क्या हो गया हमारा? ये अपर पार्ट 16, डाउन पार्ट 16, हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट 16 एंड राइट साइड पार्ट आल्सो 16. ओके, इट मींस व्हाट वी कैन से? AO या OA 16, OB 16, OC 16 एंड OD 16 सेंटीमीटर. क्लियर? ये इन्होंने जो बाइसेक्ट किया है उसकी वजह से जो डायगोनल्स हमारे 32 थे, तब हमारा क्या निकल के आ गया? ये डिस्टेंस हमारी निकल गई OA, OB, OC एंड OD. राइट? क्या हो रहा है यहां पर? AO is perpendicular on BC and DO is also perpendicular on BC. देख लीजिए आप, AO perpendicular on BC as well as DO is perpendicular on BC. Understood? Clear? So now we can find out this area. Easily we can find out. कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? 1/2 base into height. 1/2 बेस इनटू हाइट, दैट्स ऑल. अब यहां पर देखिए, आप इस एरिया को हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों हम? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रायंगल AB एंड C. सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC का निकालेंगे तो 1/2 बेस इनटू हाइट. 1/2 बेस इनटू हाइट. अब यहां पर आप बेस देखिए तो 1/2 बेस इज BC. बेस इज BC, राइट? एंड हाइट इज OA. Height is OA. Base BC and height OA. What is the value of BC? Its value is 32. And what is the value of this height? Just to find out. AO is 16. तो 32 into 16. तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 BC इनटू OA. तो 1/2 32 into 16. 1/2 32 into 16. 32 divided by 16. Now we got 16 multiply 16. 16 multiply 16. Then what we will get? 256 square centimeter. 256 square centimeter. अब एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2. एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2. तो सेकंड एरिया हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन सेकंड, दिस वुड बी आल्सो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर. देखिए दोनों एरिया निकल गए, एरिया 1 आल्सो एंड एरिया 2 आल्सो. कहीं कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक. क्या फार्मूला यूज किया हमने? 1/2 बेस इनटू हाइट. ओके, और यहां हमने इसके हाइट निकालने के लिए कौन सा कांसेप्ट लिया? परपेंडिकुलर वाला कांसेप्ट हमने यूज किया है. Why? Because AO perpendicular on BC and DO perpendicular on BC. ये concept से हमारा क्या निकल के आया? इस concept से we got that OA, OB, OC and OD height. Right on. Now दो एरिया हमारे फाइनलाइज हो चुके हैं. अब now for this third, this is equilateral triangle. Equilateral triangle means two sides are equal. Two sides are equal. A is equal to suppose 6. In that case B also 6 and C also. C is 8. या हम कोई सा भी कुछ भी ले सकते हैं. अगर मान लीजिए आपने ले लिया A6 B8 तो C6 not an issue. Okay, तो ABC we have already. Right? Now with the help of Heron's formula we can find out its area, but for that purpose what is required? Now semi parameter required. Semi parameter you know very well. S is equal to A plus B plus C by 2. The A plus B plus C by 2, then what is there? There 6 plus 8 plus 6. 8 and 6 14 and 6 20. 20 by 2. 20 divided by 2, then 10 centimeter. तो हमको क्या मिलेगा इसका? पैरामीटर्स, सेमी पैरामीटर विल गेट 10. अब सब मिल गया हमको. सेमी पैरामीटर 10 है और ABC ऑलरेडी दिया हुआ है. वी हैव टू यूज द हेरन्स फार्मूला. इन द स्क्वायर रूट व्हाट यू राइट? S minus A, S minus B and S minus C. S multiply S minus A, multiply S minus B, multiply S minus C. On the place of S you will write 10 and then 10 minus 6 because A is equal to 6, then 10 minus 8 because B is equal to 8 and then 10 minus 6 because C is equal to also C is equal to 6. Okay, अब ABC की वैल्यू डिफर होता है, no problem. Now we have to solve. Then what we will get? 10 into 4 into 2 into 4. 10 into 4 because 10 after it 10 minus 6 4, so 10 into 4, then
into 2, then into 4, right? Now you have to see here, if you are going to see this 4 2 times, then 4 we can write outside. Now what is inside? Inside we have 2 and 10, and 10 we can write in the form of 2 into 5. Now how many times 2 is there? 2 times 2 and 1 time 5. So this 2 will also come outside. So 4 2 ja 8, as well as under root 5, as well as under root 5. Okay, now we will find out the value of under root 5 with the help of long division method. Previous class we read already long at the class, long division method. Long division method, root 5. Once again I am going to clear. See here, what we have to do, we are going to write there under root 5, then 5. If this we have to divide by 2. Here we will take pairs. 2 2 ja 4, what is remain? 1 will remain. 2 and 2 we will add, then what we will get? 4. Now 2 0 we will write. 2 0 we will write, then it is 100. And now 2 and 2 4. Up now we can guess, if 40 into 0 is 0, no need. 41 into 1, then 41. Now 42 into 2, 84. और 43 into 3 ये ज्यादा हो जाएगा, तो इन दैट केस हमको क्या लेना पड़ेगा? 42 into 2, 42 into 2. दो बार लिया हमने. अब यहाँ पे 2 जीरो हमने लगाया था जो नहीं था, तो इन दैट केस हमने डेसिमल लगाया. ओके, नाउ 84, then again 2. What to write? Again 2. This we have to add. This we will get 2 2 जा 4 and 4 44. अब हमारा क्या आ रहा है? 1600. अब हम ट्राई करते हैं 440 से, फिर 441, फिर 441 multiply 1, then 442 multiply 2, then 443 multiply 3. जब हम 443 multiply 3 करेंगे, in that case we will get 1329. So yes, we can use this. तो यहाँ पे हम कितनी बार लेंगे? 3 टाइम लेंगे तो 1329, इसको माइनस करेंगे तो what we will get? We will get there 271, and this 3 will add, then we will get 446. What we will get? 446. Now we have to see how many times we have to speak this to get 27,100. So here we should try 4460, then 4461, then 4462, right? Multiply by the same number. Suppose हम ले रहे हैं 4466, then multiply by 6. In that case, what we will get? 26,796. It means how many times we can take it? We can take it near about 6 times. So same process when we will follow, then we have to find out after 2 positions only, after decimal. 2 position is enough. So we got already 2.236 and so on 0. So in that case what we can write? We can write it 2.24. What we can write? 2.24. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 8 multiply 2.24. Whenever you are going to multiply 2.24 into 8, 8 to ja 16, right? 2.24, and decimal is already first you have to 8 multiply 4, 32, 2, then remaining 3, 8 to ja 16 and 3, 19, 9, remaining 1, 8 to ja 16 and 1, 17. So what we got? 17.92 square centimeter. This is our third area. This is our third area. Now what we want, that we got. All the things is very very clear. Here area of paper of first color used in making kites, 256 square centimeter. Similarly, area of paper of second color used in making kite, 256 square centimeter, and area of paper of third color used in making kites would be 17.92 square centimeter. Clear these things? I don't think so any problem. And don't worry if you can't see on board very properly. Don't worry. Whenever this all explanation will over, then I will send you that proper answer sheet. So there you will get solution of each and every numericals. Here everything what I am going to write on board just for explanation and just for your understanding. So now we will start question number which now? Question number 8. Okay? See here guys. Question number 8. First of all we should understand what is given in the question. As per the question's statement, what is given here? Here is given a floor design on the floor, a floor design on the floor made of 16 tiles which are triangular. Tiles किस तरह से हैं? Tiles है triangular. और कितनी tiles है total? 16 tiles. Okay. और the sides of triangular tiles each 28, 9 and 35 सेंटीमीटर. मीन्स अ फ्लोर, एक फ्लोर है जो टाइल से डिजाइन किया गया है. जो वो टाइल्स है वो किस तरह से है? वो टाइल्स है ट्रायंगुलर टाइल्स है. ओके, टोटल कितना टाइल्स है? टोटल 16 टाइल्स है.
और जो साइड्स क्या है टाइल्स का साइड्स 28, 9 और 35 सेंटीमीटर है। ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, हमारे को टोटल एरिया निकालना है और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग का टोटल रेट निकालना है। व्हाट इज द गिवन रेट? गिवन रेट इज दैट मींस 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना रेट है पॉलिशिंग का? 50 पैसा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स टोटल एरिया ऑफ फ्लोर एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद दिस and then we'll get the actual cost of polishing the floor. Okay, clear? किस तरह का शेप है ये? ट्रायंगुलर शेप में, फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप है, उसी की हम स्टडी करते हैं। यू कैन सी दिस फिगर्स, you can see this figure. If you are going to see, then the total 16 tiles are here, triangular shape. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी होगी टोटल टाइल्स? 16. ओके, एज पर द स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है कि ए फ्लोर डिजाइन ऑन द फ्लोर मेड ऑफ 16 टाइल्स। कितनी टाइल्स इस फ्लोर को डिजाइन किया गया है? फ्लोर टाइल्स कितनी ली गई है इसके लिए? 16 ली गई है। और उस टाइल्स का शेप क्या है? द शेप इज ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर शेप है तो उसकी साइड्स क्या है? तो सपोज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर टाइल्स इज गिवन। व्हाट इज गिवन? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर टाइल्स आर 28, 9 एंड 35. 28, 9 एंड 35. इट इज गिवन। ओके, क्या गिवन है हमको लेंथ ऑफ द साइड्स गिवन है जो कि 28, 9 और 35 पे। तो सपोज A is equal to 28, B is equal to 9 and C is equal to 35. Okay, now this figure you can see this, all things will be clear here. What is given? That everything will be clear. Here if you are going to see 28, 9 and 35, 28, 9 and 35, you have to see this figure carefully. This is 28, okay, this is 9 and this is 35, and different colors, one color is this and one color is this. This is also same, it would be 28, this 9 and this is 35. Okay, clear this thing? So area of triangular tile, that we have to find out. Area of triangular tile we can find out with the help of Heron's formula. For that purpose, what is required? All three sides as well as semi-perimeter. Three sides we have already. Now first we will find out the semi-perimeter. A plus B plus C by 2. So in that case 28 plus 9 plus 35 by 2. Then we will get 72 by 2. 72 divided by 2. In that case we will get 35 centimeter. What we got? We got that semi-perimeter of one triangular side. Semi-perimeter of one triangle. अभी हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वन के लिए कर रहे हैं. ओके, तो वन टाइल से हमारा क्या है? सेमी पैरामीटर, दैट इज 36 सेंटीमीटर. नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल. वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल. s minus a multiply s minus b multiply s minus c. ऑल द वैल्यूज वी विल पुट देयर. पुट करेंगे 36 minus 28, 36 minus 9, 36 minus 33. Then what will remain? 36 will be same. 36 minus 28, then we will get 8. After it 36 minus 9, then 27, and 36 minus 35, then 1. Now its factor just I have done here. For 36 you can see 2 into 2 into 3 into 3. For 8, 2 into 2 into 2. For 27, 3 into 3 into 3. I have written here 2 into 2 into 3. After it means all things. First of all, for what we are writing? 28, first 36. 2 into 2, 3 into 3. 2 into 2, 3 into 3. Second one is 8. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Third one is 27. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Clear this thing? Now, which things are already 2 times that we will write out of square root. So here we can say that 2 how many times? How many pairs of 2? 1 pair, 2 pair, right? Only 2 pair. For each pair, 1, 2 will write outside. So 2 into 2, same. 1 pair of 3 and second pair of 3, right? So in that case, this 3 will also come 2 times outside. And what is remain? 1 3 inside and 1 2 inside. So 2 into 2 into 3 into 3. 2 2 is 4, 4 3 is 12, and 12 3 is 36. 36 will be out of square root and under root 6. Square root के अंदर, square root के बाहर क्या आएगा? 36 and inside square root what will be? That would be 6. Easily you can find. हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं इसमें, नॉट एन इशू. ये तो अब आपको बिल्कुल आना ही चाहिए. इसमें कोई कंफ्यूजन है ना कोई प्रॉब्लम है. हाँ, अगर आप सॉल्व ही नहीं करेंगे तो नो वन कैन हेल्प यू. कोई भी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा. आपको इतना बताया गया है, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. और आप ये पूछोगे सर ये 2 into 2 3 into 2 कैसे आ गया? तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू क्लियर. आप देख सकते हैं सब कुछ आपको क्लियर है, बस जरूरत है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की.
ओके तो ये जो हमारा एरिया निकल के आया 36 अंडर रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, it is for the one tile, it is for the one tile. Now we have to find out for the 16. Now we will find out for the 16. Okay, 16 का फाइंड करना तो 36 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 16. Now we have to find out the value of under root 6. Previous numerical we find out the value of under root 5. Before it also we will find, we got means found already that value of under root 2. So how to find? Let's see here. Same process again and again. I will not repeat. It is already long division method, and at the class you are very familiar with it. So whenever we will apply for this under root 6, then we will get 2.449. 2.449 and 2.449 means we can write it something 2.45. What we can write? 2.45. Then 2.45 we will multiply here. So 16 into 36, then 576. 2.45 both will multiply, then we will get 1411.2 square centimeter. What we got? This is the area of 16 tiles. This is the area of 16 tiles. Now everything is clear. Cost of polishing the tiles at the rate of 50 paisa per square centimeter. 50 paisa it means rupees 1/2. Rupees 1/2. ये कितने के लिए? 1 टाइल्स के लिए. तो 16 टाइल्स हमारी टोटल है. या हमने 16 टाइल्स के लिए टोटल एरिया का निकल लिया है 1411.2. तो व्हाट विल हैपन? इट इज फॉर रुपीज 1/2. इन दैट केस 1411.2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. 1411.2 मल्टीप्लाई 1/2. यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड. अब मुझसे आप पूछोगे कि सर ये रुपीज 705.60 कैसा आएगा? तो दिस इज रियली सरप्राइजिंग क्वेश्चन. इतना तो आपको आना ही चाहिए कि भाई आपको 1411.2 डिवाइड बाय 2. एक बार मैं आपके सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल आना ही चाहिए. क्या था हमारा? 1411.2 डिवाइड बाय 2. If you are going to divide it, then 2 7 ja 14, then what remain? Nothing. Now downside what you have to write? 1 we can't divide, then here 0, and another things we have to write downside. What is there? That is 1. Okay, now how many times? 5 times. 2 5 ja 10. What remain? 1. Now decimal, and what is next? 2. So 2 6 ja 12 0, then 0. My no need. If you want to write, then write, no problem. तो ये आ गया हमारा. ये देखिए 705.60. 705.60. Is that clear? So what we got? We got the rate, total rate of polishing the floor. So clear, guys? Understood? Okay. So I think for this particular video it's enough, and next questions in the next upcoming video. Okay, till bye.